Okay, this is where we left yesterday. So just see that this is where we saw an example where the memory size is 4096 words and one word was equal to 16 bits. तो उसके बाद हमने देखा कि how we were able to compute the direct address and how we were able to compute the indirect address. Processor registers. So how many registers that we have? Before we start with how many registers we have, I would like to tell you the sizes of the different registers with the same kind of an example. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं that we said that instruction is of 16 bits. So that means all those registers that deal with the instructions will be of 16 bits in size. For example, instruction register. Within the instruction, 12 bits for the same example were used to represent the address. So that means all those registers that will deal with the address part, for example, the address register should be of 12 bits. And in this particular architecture, the value or the data at one time is passed in the form of 8 bits. That means 1 byte at a time. In this example, so what will be the size of all the registers that deal with the data will be 8 bits, for example, data register. So in general, what we have is three types of sizes, which are 16 bits, 12 bits, and 8 bits. And this is not applicable to all computer architecture, but the one very basic computer system that we are studying, in which the size of the memory is equal to 4906 words and one word is equals to 16 bits in size. I hope I have made it absolutely clear that this kind of sizing is only for the example that we are studying. Okay, so let us see how many types of processor registers that we have. A processor has many registers to hold the instructions, addresses, and data. One such example is a program counter. It holds the address of the next instruction to be executed. आप जिस किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं नेक्स्ट, तो उसका एड्रेस इसके अंदर पड़ा होता है, राइट? सो what is a program? It is sequence of instructions. And what is an instruction? It is a sequence of micro operations. So we are definitely executing one micro operation. तो जो नेक्स्ट माइक्रो ऑपरेशन है उसका एड्रेस किस में पड़ा होगा? उसका एड्रेस पड़ा होगा प्रोग्राम काउंटर के अंदर. Now you remember address, how many bits does it take? An address takes 12 bits. So what will be the size of the program counter? The size of the program counter register will be 12 bits. उसी तरह से in a direct or indirect address, the processor, it stores the address where the actual operand or the next address will be located. So address register is used to keep the address of the operand, or it keeps the address of another address, another memory location. Right. So what will be the size of the address register? It will again be 12 bits because it is dealing with the address. When an operand is found, तो ऑपरेंड जब मिल जाता है तो हम उसकी वैल्यू को डेटा रजिस्टर के अंदर कॉपी कर लेते हैं. और जैसा मैंने बताया that the size of the data register in this particular example should be, let's find out in the next few slides, should be 8 bits. Then we have the basic computer or a single general purpose computer. जो आपका default register होता है वो कौन सा होता है? That is accumulator. And generally in the accumulator we have the data, so that would also be of 8 bits in size. That's what I think it will be. So आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि what is a processor register, तो आप बताएंगे one is a program counter, one is an address register, one is a data register, the next one is called the accumulator. So let's move even further.
The significance of this general purpose register is that it can be referred to in the instructions also. तो आप इंस्ट्रक्शन के अंदर ही कह सकते हैं कि एक्यूमुलेटर बता सकते हैं कि एक्यूमुलेटर के अंदर ही काम होना है. Then we have a temporary register. So often a processor will need a scratch register to store the intermediate results ना. तो we have a temporary register जिसके अंदर जो आपके temporary results हैं वो सेव किए जाते हैं. आप टेम्पररी के लिए एक्यूमुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक सेपरेट टेम्पररी रजिस्टर भी बताया जाता है कि है. सो आई थिंक बिकॉज इट आल्सो डील्स विद द डेटा, देन इट माइट आल्सो बी इक्वलेंट टू 8 बिट्स इन साइज. Right. So the basic computer uses a very simple model for input output operations. Input or devices are considered to send 8 bits of character data. Character data will then be converted into your codes, but initially it will be 8 bits of character data. So there will be one input register जो इनपुट को होल्ड करेगा, एंड वन विल बी द आउटपुट रजिस्टर जो आउटपुट को होल्ड करेगा, एंड बोथ ऑफ दीज विल बी 8 बिट long because they deal with the data, right? Can we move even further? So there is the set of all the registers that we have. This figure, this particular slide is very important because it shows how many registers we are going to deal with the basic computer. And how do we reach to this conclusion? हम इस conclusion पर पहुंचते कैसे हैं? Because of the example that is given on the right hand side, which tells you what is the size of the memory. The size of the memory is 4096 words, जिसके कारण we require 12 bits to refer to the address, and there is 16 bit long, you can say, size of one word, which means that the instruction will be of 16 bits long. So one, we have a program counter, address of the next instruction, address register, address of the you can say any data or any instruction. So they both are of 12 in size. Instruction itself is of 16 bits. Temporary register के अंदर as per this example you can have both the data or the instruction, so it is 16 bits. Output register and input register, they both have been shown to be of 8 bits, and data register is again 16 bits, so maybe it can hold both the instruction and your actual data. And the last one is the accumulator. ठीक है, accumulator is your default register, and obviously accumulator will always be equal to your data register. Okay, so that is what we have at the moment. So these are the number of registers that we are actually going to use in our architecture. Okay, so this is not specifically mentioned in your syllabi. I repeat, this is not specifically mentioned in your syllabi that we have to do this, but this is something that I am going to share with you. This is a common bus. So many students have been asking me the question how the actual transfer takes place. This is how the actual transfer takes place. You can see all the registers that have been mentioned at the back, that is address register, program counter, data register, accumulator, input register, instruction register, temporary register, and output register. So all these registers have been mentioned in here. और उसके अलावा क्या mentioned है आपकी memory. So from all these registers you can see there is one line going out. So this is called the outline. यहाँ से डेटा रीड किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द इनलाइन. ये भी हर एक रजिस्टर और मेमोरी के अंदर जाती है या यहाँ से भी जा रही है. दिस इज कॉल्ड द इन लाइन, जिसमें हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. Now let me give you an example. Let us suppose that
we want to copy some value. For example, if we want to copy address into the address register, the value of the memory, अगर हम मेमोरी की किसी लोकेशन से वैल्यू को कॉपी करके एड्रेस रजिस्टर पर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो कैसे लेकर जाएंगे? थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने करना क्या है, हमने AR के अंदर वैल्यू को कॉपी करना है जो मेमोरी के अंदर है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, मेमोरी से द डाटा विल बी प्लेस्ड इनटू, या हम DR ले लेते हैं यहाँ पर, द एग्जाम्पल विल बी मच बेटर। डाटा रजिस्टर के अंदर कॉपी करना है, किस वैल्यू को कॉपी करना है? फ्रॉम द मेमोरी रेफर्ड बाय द एड्रेस। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि मेमोरी यूनिट से पहले डेटा जो है वो बस में प्लेस किया जाएगा, एंड देन फ्रॉम द बस द डेटा विल बी placed into the data register through this input line. So the data will be placed into the outline by the memory unit into the bus, and then it will be copied into the data register. So this is how the copy will be done. But the important question right now is how the system selects the memory unit as the output line, and how does it select the data register for the input line. The answer to this lies in this box at the top. I hope everybody can see this box at the top. It has three types of lines. One is called S2, S1, and S0. These are called select bits. Please focus and note these down. These are called the select bits. It can have how many possible values? क्योंकि तीन select bits हैं, then the number of possible values it can have is 8. That means 0 0 0 0 0 ones, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, and then 1 1 0 and 1 1 and 1. So how many values are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो select bits की values हमें बताती हैं कि किसका डेटा आउटपुट पे प्लेस करना है और किसका डेटा इनपुट पे प्लेस करना है। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, द मेमोरी यूनिट हैज अ वैल्यू ऑफ 7। मेमोरी यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7। तो जब हम डेटा को रीड करेंगे, देन द वैल्यू ऑफ द सेलेक्ट बिट S2, S1 एंड S0 विल बी 1 1 एंड 1। जब तीनों की वैल्यू 1 होगी तो हमें पता चलता है कि द डेटा इज टू बी रेड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट। अब डेटा को लिखना कहां पर है? लिखना है डेटा रजिस्टर के अंदर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डेटा रजिस्टर इज 3। दैट मींस द वैल्यू ऑफ द three select bits will be 0 1 and 1। S2 will be 0, S1 will be 1 and S0 will be 1। इसका मतलब क्या है? जब हम आउट करेंगे, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, then the data will be placed into the data register। So this is how a common bus architecture looks like। थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस हर डेटा रजिस्टर और मेमोरी के नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। What does this word stands for? These stands for the operations that are possible on these registers। रीड एंड राइट, ये तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज रीड एंड राइट? रीडिंग फ्रॉम द मेमोरी एंड राइटिंग इनटू द मेमोरी। LD stands for the load operation। INR stands for the increment operation। CLR stands for the clear operation, and there is no other operation। ठीक है। जब आप वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं तो आप सिंपली इंक्रीमेंट कर सकते हैं, वैल्यू को कहीं से कॉपी करते हैं तो आप लोड कर सकते हैं, और जब आप उसको क्लियर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उस वैल्यू को क्लियर कर सकते हैं। एंड रेस्ट आई रिक्वेस्ट दैट the notes have been provided to all the students। You all are kindly requested to read the notes। You all are kindly requested to read the notes to try and understand how the actual system works, but the notes will not be different from what I have explained।
The explanation is more powerful than you can say notes. So प्लीज इस फिगर को दिमाग में रख के पढ़िए जो भी आपको पढ़ना है, बट द बेसिक एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन। इसमें एक और भी चीज है, इसमें एक और चीज है जो आई मिस्ड वन थिंग, दैट इज द क्लॉक। And the clock right here at the bottom is connected to all the registers. You can see what is a clock. Basically a clock is the, you can say, equipment जिसके कारण सब कुछ चलता है. So with every clock pulse the next you can say instruction is carried out. अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ m मूव करना है मुझे रजिस्टर 1 के अंदर a को, मुझे मूव करना है रजिस्टर 2 के अंदर बी को, एंड बोथ ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर वन साइकिल ओनली। तो जैसे ही क्लॉक क्लिक करेगी तो हम ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, जब नेक्स्ट क्लॉक क्लिक करेगी तो ये वाली इंस्ट्रक्शन करेंगे। ये जो हम बात कर रहे थे ना कि डेटा यहाँ से यहाँ प्लेस होगा और फिर यहाँ पर प्लेस होगा, तो कब प्लेस होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द क्लॉक। Sometimes both these can happen in single clock, and sometimes it requires more time than in one clock the data is placed here, and in the second clock the data is placed here. So that will depend upon the speed of the architecture. So clock is obviously the most important you can say equipment, because जो भी operations perform होते हैं वो with the help of clock ही होते हैं। So this is the explanation that I have given you. These are the select lines, और select lines की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। लोड करना, आउटपुट रजिस्टर सेलेक्ट करना, ये सब द पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन है। द लास्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दैट यू ऑल विल हैव टू फोकस ऑन दिस टॉपिक, राइट? So even though I am a little tired speaking it out, but I want to finish this off. So let's see what is the meaning of this. Now we want to understand, some students are confused still, how does the CPU know what is going on and what is not going on. So we have three types of instructions. One is called memory reference instruction, one is called the register reference instruction, and one is called the input output instruction. Right. So how do we differentiate between these three types of instructions? हमें कैसे पता चलता है that the instruction that we are going to execute is a memory reference, register reference और input output reference? तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है the value of our op code, यानी I, which is known as your mode bit and your op code, and your opcode, which is of 3 bits now. Now, first of all, we will try and understand what is the memory reference instruction. अगर आपके opcode की वैल्यू 000 से लेकर 110 के बीच में है, that means 0 से लेकर 6 तक है। I repeat, अगर आपको पता करना है कि आपकी इंस्ट्रक्शन मेमोरी रेफरेंस है, आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस है, या आपकी इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट रेफरेंस है, तो सबसे पहले आप ऑप कोड की वैल्यू चेक करेंगे। अगर आपकी ऑप कोड की वैल्यू 000 से लेकर 110 है, तो इसका मतलब क्या है? दैट यूर इंस्ट्रक्शन इज अ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद आप चेक करेंगे कि आई बिट की वैल्यू कितनी है। इफ द आई बिट इज 0, दैट मींस इट इज द डायरेक्ट एड्रेस, एंड इफ द आई बिट इज 1, इसका मीनिंग है दैट द इंस्ट्रक्शन इज एन इनडायरेक्ट एड्रेस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग इज रजिस्टर रेफरेंस एंड योर इनपुट आउटपुट रेफरेंस। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो ऑप कोड है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 1 1 एंड 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, बिकॉज
अगर वैल्यू 000 से लेकर 110 होती तो इट वुड हैव बीन मेमोरी रेफरेंस। तो उसके अलावा सिर्फ एक ही वैल्यू बची है 1 1 एंड 1। अगर आपके ऑप कोड की वैल्यू 111 है तो अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज रजिस्टर रेफरेंस और वेदर इट इज इनपुट आउटपुट। Now, if the value of the I mode, if the value of the I mode is equal to 0, that means it is a register reference. And if the value of the I mode is equal to 1, then it is called the input output reference. There is nothing else to understand, and these things are predefined. Don't ask me why the 0 is for register reference, why the 1 is for input output reference. ये प्री डिसाइडेड है, पहले से ही डिसाइडेड है, सिर्फ इन वैल्यूज को उठाकर हम लोग लिखते हैं। तो व्हेन दीज इंस्ट्रक्शंस आर टू रिटर्न, तो जब इनपुट आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को 1 पुट करता है। जब रजिस्टर से डाटा रेफर करना है तो वो इंस्ट्रक्शन में 0 फीड करके भेजता है। So with this we come to the end of the lecture today. Unfortunately, I will not be able to take questions from this section, but we will take up the questions in the next lecture at the very beginning. So thank you very much.